Hello everyone, this is Zen Merchant and this is the practice paper that I've shared with you guys. So what we'll do is we'll solve this paper right now and I will explain each question and then we are going to solve this as well. So I expect that you would have solved this paper by yourself first and then you would be using this video for checking your answers. Okay. So what we'll do is we'll start with the first question. So the first question is convert the Denry number 112 into an 8-bit binary number. So if you remember, हमारे पास जब भी 8-bit number use होगा तो हम columns जो है उनकी values किस तरह से provide करेंगे. This would be 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. ठीक है. अब now to create 112, what I need to do is मुझे इनमें से numbers को add करके बनाना पड़ेगा. I can use other approaches as well. This is the easiest one. For 1 mark, I would use this. So 64 plus 32 is 96 plus 16 would make it 112, right? So ये मेरा answer बन गया. Then carry out a logical shift 3 places to the right on your answer to part A. So part A में जो भी values को 3 spaces right पे shift करना है. तो this 3 values will be removed और ये बाकी values आपका यहाँ से start होंगी. So this will become 0, 1, 1, 1, 0 and then बाकी जो 3 spaces आपके left side में, these are going to be 0. Then it says convert the binary number in B1 into denary. So इसको denary में convert करना है. B1 में जो value उसके लिए हम क्या करेंगे again? 1, 2, 4, 8. So ये यहाँ तक ही मुझे चाहिए. So this is 8 plus 4 plus 2. It is going to be 14. ठीक है, you can show that how you came to this answer, but the question यहाँ पर सिर्फ लिखा हुआ है आपको convert करना है. 1 mark के लिए सिर्फ answer की जरूरत है. Comment on your result in part B2. So हमारे पास comment हम किस तरह से करेंगे? What we need to do is since हमने value जो है वो part A से जब B पे हमने convert किया, so what happened? So 112 कैसे 14 बन गया? So if you remember, right shift करने से आपका divide होता है और left shift करने से multiply होता है. और किस नंबर से होता है? It's going to be 2 power the number of shifts. So हमने 3 बार shift किया तो 2 power 3 से ये divide हो रहा है. So that's what we have to explain. So 112 divided by 2 power 3. So 2 power 3 हमारे पास क्या होगा? 2 power 1 is 2, 2 power 2 is 4, 2 power 3 is 8. So if you would divide 112 by 8, तो आपके पास यही आंसर आएगा, that is 14. आप इसको verify भी कर सकते हैं, but we already know कि divide कर हम shift कर दें तो divide होता है. Then it says write down the 2's complement of the binary number in B1. So B1 में हमारे पास जो value आई थी that is 14. ठीक है, and इसको हमने 2's complement form में यानी हमने negative 14 बनाना है. That is what is required here, right? So हम इसको 2's complement form में किस तरह से convert करेंगे इस number को? So करने के लिए हमारे पास जो steps हैं that is हमने flip करना है और फिर +1 करना है. So मैं यहाँ पे साइड पे इसको करके दे रहा हूँ. तो ये हमारे पास जो वैल्यूज ये फ्लिप हो जाएंगे. So this is going to be 1, 1, 1, 1 and then 0, 0, 0, 1 and then +1 करना है. तो इससे आपके पास क्या हो जाएगा? This is going to be 0 and 1 and then 1, 0, 0 and all 1. So this is your answer. ठीक है, तो यही आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे. This is going to be 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Convert the binary number in part C1 ordinary. So I know for a fact कि अगर positive 14 को हम जब 2's complement method को use करेंगे तो negative 14 बन जाएगा. But to show you how this was done, आप देख सकते हो 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, negative 128. So this is negative 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 2. So 64 plus 32 is 96, plus 16 is 112, plus 2 is 114. 114 minus 128 would be minus 14. All right, simple. We'll move to the next part.
So this is convert the binary value in C1 into hexadecimal. So आपके पास वैल्यू क्या है? This is 4 ones 0010. तो आपके पास ये बनेगा 4 ones 1 2 3 4. आपको पता है क्या होता है? This is 15 and 15 is F. और फिर आपके पास था 0010 and this is 2. तो आपका फाइनल आंसर बेसिकली क्या है? This is F2 in hexadecimal. ठीक है, I've just showed you how I got to this answer. Then question number 2. What is meant by USB? तो USB का फुल फॉर्म सबको होपफुली याद होगा. USB का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल serial bus. What is universal serial bus? That's a question. It's a standard connection used to connect devices to a computer. ठीक है. All right. Then give 3 differences between USB-A and USB-C. So USB-A, if you remember, that's the older USB that is in most of the computers के आपका connection के लिए use है for mouse and keyboard वगैरह commonly हमारे पास के साथ connect होता है. USB-C is the modern type of USB that is used for use in our phones. ठीक है, आपने phones के अंदर देखा होगा टाइप सी. I'm pretty sure आप सबको इन दोनों को आपने देखा हुआ है. अब इन दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं, so we know this for a fact that USB-C के अंदर हमारे पास क्या क्या है जो C और A से वो किस तरह से डिफरेंट है. So USB-C के अंदर 24 पिन्स होती हैं, ठीक है, और सिमेट्रिकल कनेक्शन है. It is thinner than USB-A. It carries out more power. ठीक है, ज्यादा वोल्ट आपके पास वोल्ट प्रोवाइड करेगा, तो आपके पास ज्यादा बड़ी डिवाइसेस आप चार्ज कर सकते हैं. एंड ऑल्सो इट हैज बेटर कनेक्टिविटी. तो ये आपके पास जो है वो हाई बैंडविड्थ यूज कर सकता है. 3 पॉइंट्स लिखेंगे आउट ऑफ द 4 दैट आई जस्ट सेड. एक हम लिख लेते हैं USB-C is much thinner than USB-A cable. Then USB-C offers higher connectivity. ठीक है, higher या better लिख लेते हैं. A better would be better term obviously. So better connectivity and bandwidth. And USB-C offers higher power connectivity. ठीक है, so 100 watts and more. All right, the table below shows ticked boxes related to types of data transmission. The following 5 descriptions have been missed out of the table. ठीक है, 5 descriptions दिए हुए, write each description in the correct row of the table. So I'm not going to write the correct descriptions, but I assume कि आपने लिख लिया होगा. And what we'll do is I will just mark them. So this is 1 2 3 4 5. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आपने लिखना होगा, बट मैं यहाँ पे आपके पास सिर्फ नंबर्स करके लिख रहा हूँ so that we don't consume a lot of time in just writing. So पहले वाले को हम आइडेंटिफाई करते हैं. This says since 1 bit at a time. ठीक है, तो इसका मतलब 1 bit at a time ये आपके पास हो जाएगा serial, right? And in one direction only. So इसका मतलब ये आपके पास simplex होगा. तो serial and simplex आपके पास कहाँ written है? आपके पास है in line number 2, right? So this is going to be 1. Then आपका लिखा हुआ है since 8 bits at a time, इसका मतलब parallel होगा. 8 channels along 8 channels in both directions but not at the same time. इसका मतलब not at the same time का मतलब half duplex है. तो half duplex and parallel आपके पास ये हो जाएगा. This is the first one.
Then it says 16 bits of data sent along 16 channels in both directions at the same time. तो 16 bits एक साथ send हो रहे हैं 16 channels के through, उसका मतलब ये आपका parallel है, and in both directions at the same time, that means it's full duplex, right? So parallel and full duplex is this, so you'll get 3. Then आपके पास है 8 bits of data send 1 bit at a time along a single channel. इसका मतलब ये serial होगा, एक single channel के through आप data send कर रहे हो. The data can be sent in both directions but not at the same time. तो इसका मतलब serial और half duplex. So मुझे नजर आ रहा है serial and half duplex is इधर. And then last is data sent 8 bits along 8 channels. इसका मतलब आपके पास ये parallel होगा in one direction only. तो parallel and simplex. So this is going to be यहाँ पे. तो obviously ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट किए हुए था, आपने डिस्क्रिप्शन मैच करनी थी. ऑल्टरनेटिवली आपके पास डिस्क्रिप्शंस हो सकते हैं, आप उसको मैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू, एंड यू कैन टिक द बॉक्सेस यहाँ पे. देन लिखा हुआ है डिस्क्राइब व्हेन अ चेक डिजिट वुड बी यूज्ड एज वेरिफिकेशन मेथड. सो चेक डिजिट आपके पास एज अ वेरिफिकेशन मेथड कब यूज होता है? जब आप डेटा एंटर कर रहे हो कंप्यूटर में, राइट, एंड टू इंश्योर कि आपने जो डेटा एंटर किया है उसमें कोई भी एंट्री में मिस्टेक नहीं है या एरर नहीं है, दैट इज व्हेन check digit can be used for verification, right? So हम यहाँ पे लिखेंगे when entering, और आप जब check digit की बात करें तो हमारे पास check digit is most is used with barcodes, right? So barcode में हमारे पास कौन सी values होती हैं? There are numerical values. तो हमने यहाँ पे specify करना पड़ेगा कि it will be used for numerical values, क्योंकि आपको याद होगा कि हमारे पास ये किस तरह से हम कैलकुलेट भी करते हैं, ठीक है? तो when entering numerical data into a computer, to ensure there are no errors after in entry, ठीक है, या after entry या during entry या in entry. Okay, give 3 types of error a check digit could identify. तो check digit हमारे पास क्या क्या help कर सकता है? तो generally if the idea is that check digit क्या करेगा, so any number that you've entered वो आइडेंटिफाई करेगा बाय कैलकुलेटिंग कि आपके पास चेक डिजिट्स मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे, या चेक डिजिट आपके पास के थ्रू आप एक पूरा प्रोसेस यूज करते हैं ना, सब आइडेंटिफाई करते हैं कि नंबर सही है नहीं है. सो व्हाट काइंड ऑफ एरर्स वुड यू फाइंड? फर्स्ट हो सकता है डेटा आपने एंटर ही गलत किया हो, ठीक है, 1 2 3 4 करना था, आपने जो है वो 1 2 5 6 कर दिया. या फिर हो सकता है आपके पास जो है वो कोई डेटा में एरर कोई हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वैल्यू मिस हो जाए, जैसे 1 2 3 4 था बट यू एंटर्ड 1 2 3 बिकॉज 4 आपको नजर नहीं आता है, 4 एग्जिस्ट नहीं करना था, या फिर आपने एक एक्स्ट्रा डिजिट ऐड कर दिया. एंड ऑल्सो ट्रांसपोजिशन एरर्स व्हेन द वैल्यू स्विच, 1 2 3 4 था और 1 3 2 4 हो गया, तो वैल्यूज वहीं पे, नंबर्स वहीं पे, बट आगे पीछे हो गई हैं, तो उसके लिए भी आप चेक डिजिट यूज कर सकते हो, ठीक है. तो एक एक करके देखेंगे. सो इनकरेक्ट digit entered. एग्जाम्पल भी साथ लिख लेते हैं, जरूरत नहीं है इसके लिए 3 मार्क के लिए, बट मैं एग्जाम्पल जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए. सो एग्जाम्पल 1 2 3 4 इंस्टेड ऑफ 1 3 2 4, या 1 3 1 2 4 5, ठीक है, ऐसे ही रैंडम कोई वैल्यू लिख रहा हूँ मैं. ऑल्सो हमने कहा omitted और एक्स्ट्रा डिजिट्स, ठीक है, अगर कोई डिजिट मिस हो जाता है या गलती से मैं एक्स्ट्रा डिजिट लिख लेता हूँ तो वहां पे हो सकता है. एग्जाम्पल मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की थी, 1 2 3 इंस्टेड
of 1, 2, 3, 4. And also transposition errors. Transposition is when आपके पास दो digits अपनी positions को change कर लें. Transposition errors. ठीक है, example 1, 2, 3, 4 instead of 1, 3, 2, 4. So 1, 3, 2, 4 डालना था, आपने 1, 2, 3, 4 लिख दिया. 3 और 2 ने अपनी जगह प्लेस कर एक आध हमने जो है ना जगह 2 और 3 की एक दूसरे से रिप्लेस हो गई है. दैट इज also going to be an error, और आप check digits उसको identify कर सकते हो. Name one situation where a check digit would not act as an error detection method. So आपके पास जो है वो कब नहीं होगा? When the error didn't change the check digit value, then no error would be flagged. तो आपके पास जो है अगर चेक डिजिट या उसमें से कोई और नंबर्स जो है उसमें से कोई आपका एरर नहीं आ रहा. एन एरर कुड बी, किस तरह से एरर आ सकता है जो चेक डिजिट आइडेंटिफाई नहीं कर सकता? मे बी आपके डेटाबेस के अंदर एरर था, वेयर फ्रॉम वेयर यू आर कलेक्टिंग द डेटा, फ्रॉम वेयर यू आर मैचिंग द डेटा. तो इस तरह के एरर्स जो चेक डिजिट की वैल्यू से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, वहां पे आपके पास इस तरह का इशू आ रहा है. ठीक है, देन हमारे पास लिखा हुआ है ISBN 13 is one way of generating and verifying a check digit. The algorithm to verify if a check digit has been calculated correctly is given below. ठीक है ना, आपके पास नीचे steps दिए हुए हैं. Use the above algorithm to find out if the following number has been entered correctly. The check digit is shown as the rightmost digit. तो आपके पास जो 4 है, जो रेड कलर में आपके पास आइडेंटिफाई किया, दैट्स योर चेक डिजिट वैल्यू. और इस पूरे प्रोसेस को हमने यूज करना है, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आपके पास जो, इफ यू रिमेंबर, देयर आर टू प्रोसेसेस. वन इज कि आप जिससे चेक डिजिट कैलकुलेट करते हो, तो चेक डिजिट यहाँ पे कैलकुलेट हुआ हुआ है. एंड देन सिमिलर प्रोसेस, एग्जैक्टली सेम ही है, बट यू वुड आल्सो इंक्लूड चेक डिजिट इन दिस टू कैलकुलेट द वैल्यू. एंड उससे आपके पास होगा ये कि वैल्यू अगर आपके एंड में 0 आती है, इसका मतलब चेक डिजिट ठीक था. सही है. सो हमने ये पूरे प्रोसेस को करना है. सबसे लिखा हुआ है ऐड ऑल ऑड नंबर्ड डिजिट्स टुगेदर. तो आपके पास ये किस तरह से होगा? दिस वुड बी 9 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4. आई हैव आल्सो एडेड द चेक डिजिट बिकॉज चेक डिजिट भी ऐड होगा साथ में टू गेट द आंसर एज 0. ठीक है, वरना अगर चेक डिजिट को यूज नहीं करूंगा तो आपके पास इफ द चेक डिजिट वाज राइट, वापस आपके पास 4 ही आंसर आना चाहिए. बट आप अगर नोटिस करोगे इस प्रोसेस के अंदर, ये आपके पास इफ यू वुड गो थ्रू द नोट्स, यू विल आल्सो सी कि ये आपके पास मेथड दिया हुआ जहां पे आप कैलकुलेट करके 0 लाते हैं. सो इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 17 प्लस 4 इज 21, 22, 28, 34, 38. ठीक है, तो ये हो गया 38. देन लिखे add all the even number digits together and multiply the result by 3. okay, so ये आपके पास है 7 plus 1 plus 7 plus 8 plus 8 plus 8. तो ये जाएगा 8 and then 15, 23, 23 के बाद आपके पास आएगा 31, 39. और फिर मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. तो मल्टीप्लाई बाय 3 करने से हो जाएगा आपके पास 117. फिर स्टेप 3 क्या है? Add the results from 1 and 2 together and divide by 10. So 117 plus 38 आपके पास बनता है 155. और जब आप इसको डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा? 15 आंसर आएगा क्वेश्चन का, बट रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास? रिमाइंडर
आपने चेक करना है बिकॉज लिखा हुआ है चेक डिजिट करेक्ट इफ द रिमाइंडर इज 3 रिमाइंडर इज 5 तो आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा 5 आएगा और जब रिमाइंडर आपके पास 5 आएगा दैट मीन्स कि आपके पास जो है रिजल्ट ये आपके पास गलत आया है बिकॉज इट शुड हैव बीन 0 ठीक है 15 आता है और रिमाइंडर आपका 5 आता है तो आप नीचे आप कमेंट लिख देंगे ठीक है द check digit is incorrect okay ये हमने कर लिया complete we'll move to the next question this is question number 4 in one-human architecture both buses and registers are used name two buses so दो buses कोई भी बता सकते हैं data address और control bus में से so address bus लिख लेते हैं एक और एक हम लिख लेते हैं डेटा बस आप कंट्रोल बस भी लिख सकते हो उनमें से किसी की जगह पे टू रजिस्टर्स हमारे पास दो कोई भी आप दो रजिस्टर्स लिख दें एक मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम काउंटर इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर ठीक है पीसी और एक मैं लिख लेता हूँ करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर विच इज CIR ठीक है आप इसकी जगह पे MAR MDR accumulator किसी के बारे में लिख सकते थे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द टू बसेस एंड the two registers you named in part A. So आपके पास एड्रेस बस डेटा बस प्रोग्राम काउंटर CIR आप ये चारों को एक्सप्लेन करें 4 मार्क का क्वेश्चन है इसका मतलब एक एक स्टेटमेंट वुड बी इनफ फॉर दीज तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले एड्रेस बस के बारे में सो एड्रेस बस carries addresses throughout computer system majorly this is connected from CPU to the memory ठीक है बट आपके पास दूसरे जो कंपोनेंट्स हो सकते हैं दूसरे आपके पास जो डिवाइसेस हो सकते हैं वुड आल्सो might need something from the memory so anyone who wants to fetch data from the memory they will have to give the address through the address bus और वो memory को send हो जाएगा and also हमने देखा था data bus के बारे में देखा था data bus carries data between CPU memory and IO devices ठीक है फिर हमारे पास है रजिस्टर्स प्रोग्राम काउंटर सो पीसी में लिख लेता हूँ बिकॉज मैंने ऊपर जो फुल फॉर्म लिखा था उसके बाद मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया सो नेक्स्ट टाइम आई कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म यू कैन यूज अ शॉर्ट फॉर्म विदाउट फर्स्ट राइटिंग द फुल फॉर्म एंड देन मेंशनिंग किसका शॉर्ट फॉर्म ये है सो पीसी स्टोर्स द एड्रेस where the next instruction to be read can be found ठीक है एंड CIR में क्या होगा आपके पास दूसरा हमने लिखा था CIR so CIR stores current instruction being decoded and executed ठीक है तो अभी जो भी हम करंट इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहे हैं एग्जीक्यूट कर रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टोर्ड इन द CIR ठीक है ऑलराइट चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय क्वाड कोर प्रोसेसर सो क्वाड कोर प्रोसेसर का मतलब ये है CPU जिसके अंदर आपके पास एक कंप्यूटर जिसके अंदर 4 कोर्स हैं सो इफ यू वुड हैव 4 कोर्स राइट सो दीज 4 कोर्स आपके पास हैं वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे ठीक है एंड जब ये कनेक्ट होंगे तो आपके पास टोटल कितने चैनल्स क्रिएट हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 so 6 channels with
4 cores. So quad का मतलब होता है 4, right? And what is a core? Core is basically made up of ALU, control unit, and register. So हम यहाँ पे लिख देंगे core are made up of ALU, control unit. आप arithmetic and logic unit पूरा आप लिख सकते हैं, ठीक है? And registers. A quad core. अब 2 मार्क के लिए तो मुझे क्वाड कोड को भी एक्सप्लेन करना, मैंने कोड को एक्सप्लेन किया, मैं क्वाड कोड एक्सप्लेन करना। क्वाड कोर प्रोसेसर्स are made up of 4 cores, and each core communicates with the other 3 cores using 6 channels. मुझे पता है मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है. It's okay if you write more points. I could have stopped at just writing कितने 4 cores है, but I have mentioned the other 2 points because मैंने वो आपको explanation में भी mention कर दिया था. ठीक है? Okay, all right. So we will now move to question number 5. Describe what is meant by a QR code. So QR code is similar to a barcode, ठीक है? But difference ये है कि ये एक आपके पास एक matrix form में होता है, ठीक है? और उसके अंदर आपके पास dark boxes आपके पास होंगे, and उसके अंदर बीच जो है light background, white background होगा. एंड उसके अंदर जो कॉर्नर्स हैं आपके पास के थ्रू आप अलाइन कर सकते हो और आप कैमरा के थ्रू उसको रीड कर सकते हो. 2 मार्क के लिए इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं लिखेंगे, विल ट्राई टू बी वेरी प्रिसाइज. सो राइट QR कोड are a type of barcode which uses a matrix of dark squares on a light background. Rather than dark and light lines. ठीक है? So हमारे पास boxes बने होते हैं, squares बने होते हैं instead of lines. So when I'm comparing it against the barcode. ठीक है? Then next लिखा हुआ आपके पास, a company advertising its website uses QR code on the walls of a city metro system. Describe how a passenger using the metro system could use the QR code to visit the company's website. तो पूरा process बताना है. So if I hope आप सबने barcode आपने जो QR code use किया होगा, and for that आपको क्या करना पड़ेगा, कैमरा को पॉइंट करना पड़ेगा, अपने फोन के कैमरा को पॉइंट करना पड़ेगा QR कोड पे, और आपने फॉरन से वो इमेज जो है उसकी बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन जो है उसको प्रोसेस करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा इनटू बाइनरी डेटा, एंड देन आपका ब्राउजर आपको स्पेसिफिक वेबसाइट पे ले जाएगा जो आपके पास उस आपके QR कोड के अंदर वैल्यू लिखी हुई थी जो आपने बाइनरी में कन्वर्ट की है. ठीक है? सो विल जस्ट राइट दैट फॉर 4 मार्क्स. सो राइट पैसेंजर, बिकॉज वी हैव टू ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी आपका क्वेश्चन है जो उसमें कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ, जो सिचुएशन दी है, सिनेरियो दिया हुआ, उसी की बेसिस पर हम आंसर देंगे. ठीक है? तो पैसेंजर पॉइंट्स कैमरा on a smartphone at the QR code which is captured and processed
by converting the dark squares into binary data. ठीक है, then आपके पास क्या होगा, the browser of the smartphone will automatically read the generated data and decodes the web address and opens it. ठीक है, तो आपने देखा होगा ऑटोमेटिकली आप क्लिक करते हैं उस पर और फौरन से उसको ओपन आपको एप्लीकेशन करके देता है. देन लिखा हुआ आपके पास गिव वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग क्यूआर कोड्स रेदर देन बार कोड्स. सो एक एक लिखना है, ठीक है. तो एक हमारे पास जो है वो क्यूआर कोड का एडवांटेज क्या है, हम ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज पॉसिबल टू होल्ड लार्ज amounts of information. And disadvantage क्या है? डिसएडवांटेज हमारे पास ये है कि इसके अंदर हम अटैगिंग हो सकती है. ठीक है, इफ यू रिमेंबर हमने जो वर्कशॉप में भी हमने ये टर्म देखा था अटैगिंग. सो अटैगिंग इज व्हेन क्यूआर कोड के अंदर मलिशियस कोड हम एंटर कर देंगे तो वो आपके पास अटैगिंग होगी, जिससे आपके पास आपके कंप्यूटर का आपके डिवाइस को हार्म हो सकता है. सो क्यूआर कोड कैन contain malicious code. ठीक है, this is called attacking. ठीक है, all right, zoom out. We'll move to the next question, and this is question number 6. So question number 6 is John is taking photographs using a smartphone. The built-in camera uses a detector with a 2048 by 1536 pixel array. The smartphone's camera software uses a 20-bit depth of 24 bits. Explain the two terms, pixel array and color depth. तो pixel array आपके पास is, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, pixel array is a matrix of tiny sensors which make up a CCT. ठीक है, and color depth क्या होता है? Color depth is the number of bits used to represent the color of each pixel. ठीक है, सो पिक्सल एरे आपके पास जो पूरा आपने इमेज जो आपने क्रिएट की थी फ्रॉम दैट फोन, वो आपके पास सीसीडी के थ्रू जो है वो आपके पास कलर्स को आपने अपने पास स्टोर किया था, एंड दैट वाज बेसिकली इन अ मैट्रिक्स फॉर्म. तो वो टाइनी छोटे छोटे सेंसर्स थे. वेयर कलर डेप्थ की जब बात करें तो कलर डेप्थ इज द नंबर ऑफ बिट्स जो आपको चाहिए होंगे फॉर ईच पिक्सल, यानी उसके अंदर वो कितने कलर्स वो रिप्रेजेंट कर सकेगा. Then like a John smartphone has 64 GB, ठीक है, अवेलेबल मेमोरी. ठीक है, तो जीबी बाइट्स इसको हम कहते हैं.
Assuming all the photographs are the same size, calculate how many photographs could be stored on John's smartphone. तो पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एक पिक्चर की साइज क्या। तो एक पिक्चर की साइज आपको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बाय मल्टीप्लाइंग द रेजोल्यूशन विद द बिट डेप्थ। तो ये हो जाएगा आपके पास 2048 times 15, it says 1536 multiplied by 24। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास आंसर आएगा बिट्स के अंदर, हमारे पास जो अवेलेबल स्पेस है वो है जीबी बाइट्स में। तो पहले हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर जीबी बाइट्स में उसको कन्वर्ट करके इसका आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा, डिवाइड करेंगे हम 8 से, एंड देन 1024 से कीबी में होगा, फिर 1024 से मीबी में होगा, फिर 1024 जीबी में होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 16 एंड देन 24 3 टाइम्स होगा, एंड देन इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, एंड यू कैन फर्दर डिवाइड दिस एज वेल। ठीक है, अब बाकी काम आपको जो है वो अपने पास मैनुअली आपने करना पड़ेगा। तो आपको जो है वो अलग से स्पेस आपके पास होगा वेर यू वुड बी एबल टू कैलकुलेट इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा। तो आप इसको जो है वो अपने पास यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये जाएगा आपके पास 1536 टाइम्स 3 एंड देन डिवाइड बाय 512 एंड देन डिवाइड बाय 1024। तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी 0.00879। ठीक है, एंड और भी बहुत बड़ा नंबर है, बट दिस इज वेयर आई विल स्टॉप। अब हमने क्या करना है, दैट्स द साइज ऑफ वन पिक्चर एंड GB bytes. Now if I have size of one picture, मुझे सिर्फ ये करना है, अपने पास 64 से डिवाइड करना पड़ेगा। 64 डिवाइडेड बाय 0.00878 तो इससे मेरे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7281। That's the number of pictures, that's the number of photos that John can store. Now you would be thinking, sir, ये तो बहुत ज़्यादा आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसको हमें कैलकुलेट बहुत ज़्यादा मुश्किल से करना पड़ेगा। So yeah, you can expect some difficult questions. थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस आ सकती हैं, इतनी ज़्यादा शायद डिफिकल्ट हो भी सकती है, हो सकता है इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट ना भी है, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। ठीक है, सो आई होप आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकोगे ऑन पेपर। मेंटल मैथ नहीं तो आप जो है वो साइड पे स्पेस दिया हुआ होगा वेयर यू विल बी एबल टू सॉल्व इट योरसेल्फ। देन हमारे पास आते हैं पार्ट डी में। द फॉलोइंग लोगो ऑफ अ कंपनी कॉल्ड CIC is being designed on a computer. The final design is stored in a file called logo1. Describe how RLE could be used to reduce the size of the file logo1. Write down the data you would expect to see in the RLE compressed format file and describe how this would differ from the original file. तो हमें दो चीजें बतानी है, एक तो बताना है RLE किस तरह से होगा, इसका आंसर क्या आएगा, और फिर दूसरा बताना है कि हाउ इज इट डिफरेंट। इंक्लूड इन योर आंसर एनी फाइल रिडक्शन यू माइट एक्सपेक्ट टू सी। तो आपने बताना है फाइल रिडक्शन अगर हुई है तो कितनी हुई है। ठीक है, यू मे अज्यूम दैट द कलर कोड फॉर अ ग्रे स्क्वायर is 80 and for a white square is 255. तो हमें क्या करना है, सो हमें काउंट करना पड़ेगा। सो विल स्टार्ट काउंटिंग। सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास है 12 एंड 12 बॉक्सेस ऑफ ग्रे स्क्वायर्स, तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है, देन आपके पास है 1 स्क्वायर of white which is 255. Then you have 1 2 3 4 squares of gray, then 1 square of, थोड़ा zoom in कहते हैं, 1 square of white, and then 2 squares of gray, 1 square of white, 1 square of gray, 2 square of
वाइट। अब यहाँ पे स्पेस खत्म हो गया, इसका मतलब ये नहीं मैं यहाँ पे स्टॉप कर जाऊंगा, आई विल मूव टू द नेक्स्ट लाइन, आई विल कंटिन्यू डूइंग दैट। सो टू वाइट आ गए, फिर टू ग्रे आएंगे आपके पास, कहाँ थे हम लोग, सॉरी। सो एक वाइट एक ग्रे टू वाइट, एक वाइट एक ग्रे टू वाइट, राइट, यहाँ पे ही थे हम। एक मिनट मैंने, सो टू ग्रे आफ्टर वन वाइट एंड देन वन वाइट, वन ग्रे टू वाइट, ओके ठीक है। सो हमारे पास होगा फिर उसके बाद टू ग्रे अगेन, so this is 2 and then 80 and then 2 हमारे पास whites हैं and then 1 हमारे पास ग्रे है, 1 हमारे पास जो है वो white है 255 and then हमारे पास सॉरी 1 नहीं है 2 है ये, ठीक है। हम यहाँ पे हैं, ये हो जाएगा 1 and then 2, then हमारे पास है 1 ग्रे, ठीक है, 2 whites and then 2 grays and then 2 whites and then अभी भी कंटिन्यू चल रहा है हमारे पास। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे जो है ब्रेक किया था। देन हमारे पास है 2 grays 2 whites 1 gray and then 2 whites 1 gray 2 whites 2 grays 2 whites and then 1 gray। अब यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है तो कोई मसला नहीं है, हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। सो 1 gray and then 1 white and then 2 grays 1 white and then 4 grays and then 1 white and then आपके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, so आपके पास हो गए 12 whites, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा बन जाएगा आप कंप्लीट आपका RLE में कन्वर्जन, ठीक है। ओके तो ये हमने कंप्लीट किया। अब हमने क्या करना है, एक तो बनाने के बाद then we have to describe how it is different from the original file। तो original file को अगर आप नोटिस करोगे, this is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 1 2 3 4 5 6, तो 6/10 का आपके पास लोगो है एंड अब लोगों के अंदर हर कलर जो आपके पास देखो इसमें, क्योंकि आपको नजर भी आ रहा है says 255, सो वी एक्सपेक्ट कि आपके पास के एक सिंगल बाइट का आपके पास पिक्सल होगा। तो हम यहाँ पे इसी तरह से लिखेंगे, विल राइट दैट द ओरिजिनल लोगो is 10 times 6 equals to 60 bytes, ठीक है। एंड reduced या compressed हम लिख देते हैं, term would be a better option, so compressed logo is of कितनी साइज है इसकी, तो आप काउंट करोगे ईच बॉक्स जो हमने एक वैल्यू लिखी है यानी एक नंबर और उसका कलर कोड दोनों एक एक बाइट है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 is of 46 bytes। सो आपके पास अब रिडक्शन कितना हुआ, देन द क्वेश्चन इज दैट। सो ओरिजिनली आपके पास था 60 बाइट्स और अब आपके पास जो है वो 46 बाइट्स का हो गया, राइट। सो हमारे पास जो है अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये जाएगा हमारे पास 46 डिवाइडेड बाय 60 वुड बी 0.6 0.67 कर देते हैं, 0.77 करते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। सो दैट मीन्स कि आपके पास रिडक्शन कितनी हुई, ए रिडक्शन ऑफ
23%। तो जब मैंने डिवाइड किया तो मुझे पता चला कि अब स्टोरेज कितना ले रहा है स्पेस, 0.77% स्टोरेज का स्पेस है। यानी आपका परसेंटेज वाइज 77% आपके पास अब साइज हो गई है। So if the size is 77, तो 100 में से अगर मैं माइनस करूंगा, नहीं 100% था पहला का स्टोरेज और अब 77% स्टोरेज यूज कर रहा हूँ, इट मीन्स कि हमारा जो स्टोरेज स्पेस है वो 23% रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सो यू वुड डू 100 minus 77 to get 23. Okay, so next लिखा हुआ है describe the differences between lossy and lossless file compression. So एक एक मार्क के लिए दोनों लिखना है। तो लॉसी में क्या होता है, इन लॉसी the original file cannot be reformed once the compression algorithm is performed। ठीक है, क्योंकि हम क्या करते हैं, डेटा इसमें से लूज कर लेते हैं और हमारे पास अननेसेसरी से ये डेटा जब गायब हो जाएगा, वी वुड नॉट बी एबल टू रिक्रिएट दैट। इन लॉसलेस हाउएवर, in lossless, it is possible to get the original file back again after the compression has taken place। तो आपके पास जब कंप्रेस हो जाएगी फाइल, उसके बाद you would not lose data, you however would be compressing the file। तो इससे होगा ये that आप उसको recreate कर सकते हो। ठीक है, alright, question number 7। Data is being sent from a computer to a printer. Interrupts and buffers are used in this process. Explain the role of buffers during the printing process. The buffers are basically used for storing data temporarily। ठीक है, तो आपके पास बफर में जो है वो डेटा चले जाएगा एंड देन आपके पास वो एम्प्टी होगा तो आप उसको रीफिल करते हैं। एंड ये प्रोसेस कब तक कंटिन्यू करते हैं, जब तक हमारे पास सारा डेटा प्रिंट आउट नहीं हो जाता। फॉर 2 marks we'll write buffers, पहले उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, what buffers are। So buffers are used to hold data temporarily as they allow the CPU to carry out या carry on with other tasks while printing takes place। Once a buffer is empty, it needs to be refilled until printing process is complete। ठीक है, हाँ नो काफी सारी चीजें लिख दी, but I had to explain this entire process because question में क्या लिखा है, printing process के against उसको explain करना है। So I had to define what buffer is, then against that उसको explain करना भी जरूरी था। Explain how interrupts are used in the printing process। तो interrupts कैसे यूज होते हैं, जब आपके पास पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा या कोई एक स्पेसिफिक टास्क कंप्लीट होता है, देन आपको सीपीयू की अटेंशन की जरूरत होगी, दैट इज व्हेन आपके पास जो है वो इंटरप्ट जनरेट होगा। एंड देन आप इंटरप्ट को
की प्रायोरिटी को कंपेयर करते हैं, देन यू सर्विस द इंटरप्ट, एंड देन आप अपने पास जो जिस इस प्रोसेस के अंदर यू वुड वांट कि आपके पास बफर जो है वो वापस फिल होता रहे, सो दैट्स व्हाई यू वुड नीड द इंटरप्ट्स टू कम। सो हम यहाँ पे इसी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सो व्हेन 3 मार्क के लिए लिखना है, व्हेन द बफर इज एम्प्टी, the printer sends an interrupt to the CPU requesting more data। ठीक है, ये हमारे पास एक काम हो गया। अब जब हमने रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो रिक्वेस्ट सेंड करने के बाद आपके पास क्या होगा, अब इसके बाद द CPU suspends its present task and checks the interrupt प्रायोरिटी। तो हम इसके बाद उसको कंपेयर करेंगे कि इस इंटरप्ट की प्रायोरिटी क्या है, बिफोर सर्विसिंग द interrupt, right? So if only the priority is higher, then आप उसको सर्विस करोगे। Now इस क्वेश्चन के अंदर मैं इसको पूरे प्रोसेस को भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ, but I see that the marks are not enough, so I would not do that. But you can get questions where you would be asked कि interrupt कैसे process होता है, तो आप उसके अंदर बताओगे कि interrupt की comparison हम करेंगे priority को, फिर अगर only if the interrupt is of higher priority, then we would service the interrupt। ठीक है, एंड देन ये होता क्यों, अब क्वेश्चन में क्योंकि लिखा हुआ है यूज इन द प्रिंटिंग प्रोसेस, तो हम इसको बताने कि क्यों प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए यूज होगा, सो दैट आपके पास जो बफर एम्प्टी हो गया उसको आप रीफिल कर सकें, राइट? दिस प्रोसीजर occurs each time buffer is empty until no more data remains to be printed। तो और कोई भी अगर मुझे डेटा प्रिंट नहीं करना है तब तक ये हम कंटिन्यू करते रहेंगे। ओके, ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, कंप्लीट the following table by writing an appropriate sensor that could be used in each application being described। Each sensor chosen can only be used once। तो हमने एक बार ही एक सेंसर यूज करना। So let's see कौन कौन सी जरूरत है हमें। 6 मार्क का क्वेश्चन है, pick up the noise of breaking glass in an intruder alert system, so that would be acoustic sensor, right? क्यों, आवाज से रिलेटेड है, ठीक है। Use in mobile phones to switch between portrait and landscape mode when a phone's orientation is changed। So if you change the orientation of the phone, that is going to be identified through the accelerometer। Use in anti-locking lock braking system, ABS के अंदर हमारे पास जो यूज होता है, तो ABS के अंदर हमारे पास यूज होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि वो मैग्नेटिक लॉक बन जाता है। Sends data to allow vehicles windscreen wipers to turn on automatically when it starts to rain, so that is an active infrared, या फिर जस्ट मैं इंफ्रारेड भी लिख सकता हूँ। यूज टू डिटेक्ट अ लीक इन द रेफ्रिजरेंट इन एन एयर कंडीशनिंग यूनिट, तो दैट इज गोइंग टू बी फॉर ए गैस सेंसर। आप गैस चेक कर सकते हो कि लीक हुआ नहीं हुआ। एंड मॉनिटर्स द मॉइस्चर लेवल्स इन द एयर इन अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग माइक्रोचिप्स। तो एयर के अंदर आपने जो है वो मॉइस्चर चेक करना है, तो दैट इज ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी सेंसर। ऑलराइट, देन लिखा है
आपके पास a vending machine dispenses cold cans of data or cold cans of soda at less than 4 degrees centigrade. The vending machine also has an inbuilt security system to sound an alarm if the machine is tilted by more than 20 degrees. The operation and security of the vending machine is controlled by sensors and a microprocessor in an embedded system. Describe what is meant by an embedded system. तो हमने बताना है embedded system क्या होता है. तो embedded system is a combination of hardware and software और वो सिर्फ एक specific task के लिए बनता है. ठीक है. अब ये जो हार्डवेयर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, इलेक्ट्रिकल हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल हो सकता है आपके पास हार्डवेयर. ठीक है, इज गोइंग टू बी आइदर और. तो हमने यहाँ पे इतनी ज्यादा चीजें बतानी है. हम सिर्फ ये बताएंगे दैट एम्बेडेड सिस्टम्स are a combination of hardware and software designed to carry out a specific function. तो एक specific task के लिए आपके पास एक embedded system create होता है. नेक्स्ट लिखा है आपके पास नेम ए सेंसर दैट कुड बी यूज्ड टू इंश्योर दैट द सोडा कैंस कैन आर ओनली डिस्पेंस्ड एट लेस देन 4 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपने टेम्परेचर चेक करना है, तो इसलिए आपको कौन सा सेंसर चाहिए होगा? आपको चाहिए होगा टेम्परेचर सेंसर. नेम अ सेंसर दैट कुड बी यूज्ड टू मॉनिटर एनी अटेम्प्ट इन टिल्टिंग द वेंडिंग मशीन बाय ओवर 20 डिग्रीज. तो आपके पास टिल्ट आपने देखना है. तो हमने अभी जस्ट देखा था पीछे एक्सेलरोमीटर आपके पास वही चेक करता है कि अगर आप उसकी ओरिएंटेशन चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे यूज होगा एक्सेलरोमीटर. ओके, देन लिखा आपके पास डिस्क्राइब हाउ द सेंसर्स एंड माइक्रोप्रोसेसर्स आर यूज्ड टू मेंटेन the temperature below 4 degrees centigrade and to raise an alarm if it is tilted by more than 20 degrees. इसके अंदर आपके पास आप दो सेंसर जो ऊपर हमने आइडेंटिफाई किए वो हम यूज करेंगे एंड दैट विल सेंड अ डेटा टू द माइक्रो प्रोसेसर. तो प्रोसेस बड़ा सिंपल होता है आपके पास हमेशा. एक सेंसर्स आप बताएंगे, सेंसर जो आपके पास एडीसी के थ्रू पास करेंगे डेटा एंड विल सेंड इट टू अ माइक्रो प्रोसेसर. ठीक है. अब माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा? विल कंपेयर इट अगेंस्ट सेट वैल्यूज आपके पास जो भी दी गई है. तो सेट वैल्यूज होंगी कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए और ये एंगल होना चाहिए एंड ऑटोमेटिकली उसकी बेसिस पे वो क्या करेगा? अगर वो उसको पास नहीं करते सेट वैल्यूज को तो आपके पास एक्चुएटर को एक सिग्नल सेंड होगा एंड एक्चुएटर से जो भी चीज कनेक्टेड होगी दैट विल बी ऑन और ऑफ. ठीक है. और ये हमारा प्रोसेस पूरा कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. तो एक आपके पास बार बार फीडबैक आता रहेगा टू द सेंसर. सो विल कीप ऑन चेकिंग अगेन एंड अगेन. So that's what you have to mention here. So we'll write there are two sensors, the temperature sensor and accelerometer constantly send data to a microprocessor through ADC to ensure the data is oops yeah so the data is converted to digital. ठीक है. The microprocessor checks
the temperature if it's greater than or equals to 4, ठीक है, क्योंकि below 4 होना चाहिए, then a signal is sent to the actuator to start air compressor. Yep, just a compressor. Start compressor. If it's less than 4, then actuator stops compressor. If tilt value is greater than 20, then microprocessor sends a signal to sound the alarm through actuator. This process is continuous. ठीक है, continuous. I know काफी सारी चीजें हमने देखी हैं, यहाँ पे मार्क शायद थोड़े से कम है, but it had 2 different things to check. तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 different चीजें अपने पास जो है वो डिफाइन किया है। आप इसमें क्या कर सकते थे, इसमें आई कुड हैव मिस, क्योंकि अगर मैंने एक चीज लिख ली थी ग्रेटर देन 4 पे क्या होगा, तो लेस देन 4 मुझे चेक करने की जरूरत नहीं होगी। Okay, question number 9. So question number 9 is explain what is meant by the term blockchaining. So blockchaining आपके पास हमने अभी जो वर्कशॉप किया था उसके अंदर हमने डिटेल में बात की थी। तो blockchaining is a decentralized database where all transactions are stored. It consists of a number of interconnected computers, but no central server. So everyone who is part of this will have their own copy of the database, and वो उसको basically verify करने में help करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे computers हैं इनके पास ये data होगा, so आपके पास एक single जगह पे data copy ऐसे नहीं होता। Then it says describe how blockchaining is used to prevent data tampering. तो हमारे पास जो हर ब्लॉक होगा उसका एक यूनिक हैश वैल्यू होगा, एंड अगर हम हैश वैल्यू के साथ कहीं पे भी टेम्परिंग होगी तो आपके पास उसकी हैश वैल्यू चेंज जाएगी, ठीक है, या उसका डेटा में अगर टेम्परिंग होगी तो उसकी हैश वैल्यू से मैच नहीं करेगा। एंड इस वजह से द एंटायर चेन और बाकी जो आपके ब्लॉक्स होंगे वो सारे जो प्रॉपरली नहीं चलेंगे और आपके पास प्रिवेंट करेगा फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू टेक प्लेस। सो हम यहाँ पर यही पूरी चीज एक्सप्लेन करने वाले हैं दैट ईच block has a unique hash value. If the data in a block is tempered with, then the hash value will also change. It
links with the other blocks will be broken. And इस वजह से आपके पास transaction complete नहीं होगा. Okay. All right. So आगे चलते हैं. Then it says describe what is meant by social engineering. तो social engineering का मतलब ये होता है कि have to manipulate people by manipulating their emotions, ठीक है? Such as उनको डराना या फिर उनको किसी भी वजह से जो उनको उनके इमोशंस के साथ आपने खेलना या उनके साथ जो है वो चेंज करना थ्रू दैट वो उसको क्यूरियस हो जाएंगे, उसका आंसर देंगे या उस चीज़ को यूज़ करेंगे एंड उससे आपके पास जो है वो अपना इंफॉर्मेशन जो है वो लीक कर सकते हैं. सो यहाँ पर हमने इसको ये डिस्क्राइब करना है दैट मैनिपुलेटिंग people into breaking their normal security procedures in order to gain illegal access to their computer. ठीक है. Okay, then लिखा आपका describe two methods used by cyber criminals to attack and target and attack their intended victims. So एक तो हमारे पास जो है हम phishing scams हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है. हमारे पास scarewares हो सकते हैं और क्या हो सकता है इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे डिफरेंट तरीके थे. हमने यहाँ पर सिर्फ 2 लिखते हैं, ठीक है. आप मैसेजेस कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग, जिसके अंदर आपके पास malicious लिंक हो सकता है, राइट. या यू कैन सो यू हैव सीन दैट आपके पास जो है मेमोरी स्टिक्स या आपके पास यूएसबी जो है लाइंग अराउंड होती है, लोग उसको क्यूरियस होते हैं देखने के लिए कि वो क्या है उसके अंदर, देन दे वुड यूज दैट, तो उससे उनके पास वायरस आ जाएगा, right? So we just need to just name and describe two. That is instant messaging containing malicious links and scareware to make them download malicious software such as fake virus checkers. And obviously there are more things and you can have it described in different ways. Explain what is meant by two-step verification, why it is used. So two-step verification क्या होता है is a type, हम सबको पता है, हम सबने यूज भी किया, a type of authentication that requires two methods of verification to prove the identity of a user. जैसे इसमें क्या क्या हो सकता है, the user logs in to a website by entering user name and password, a 4-digit PIN is sent to user's phone to, या phone पे क्या होता है, OTP, right?
to enter the one-time password, OTP. Okay, then हमारे पास explain why it is an advantage to allow automatic system software upgrades on a computer system. So automatic आपका software upgrades फायदा क्या होगा? Automatically जितने भी security patches होंगे या performance के लिए जो patches होंगे वो सारे के सारे automatically install हो जाएंगे. So they allow for patches that update software security, patches that improve software performance. All right, so ये complete हो गया हमारे पास. Then question number 10, and question number 10 is 7 terms are being described below. Each term, name each term being described. A combination of a software and hardware designed and programmed to work automatically without the need of human intervention. So that is a automated system. Then लिखा है devices that are mechanical and electronic structures designed to automatically carry out a task. So these are controllers. Sorry, no, these are robots, mechanical structures and robots to carry out a task, single task. Name of our brain used by a device such as robot that can be programmed for a specific task. Program for a specific task is a controller. ठीक है, it's a type of an embedded system. ठीक है. Then हमारे पास है robots that have no direct human input and can completely replace any human requirement. So that is autonomous. Branch of computer science dealing with the simulation of intelligent human behavior. So intelligent human behavior को mimic करना, simulate करना, that is artificial intelligence. Artificial intelligence. A form of AI that mimics human knowledge and experience to solve problems difficult enough to require some degree of human expertise. So it should be able to mimic the AI human capability. So that's an expert system. It's a type, it's a form of an AI. A subset of AI in which the algorithms are trained and learned from the past experiences and examples. So that is machine learning. So you should remember and memorize these definitions. These are going to come in your exam. So make sure that you know these, right? And then our pass question number 11. In the following diagram, 6 descriptions are shown on the left and 10 computer terms are shown on the right. By drawing lines, connect each description to the correct term. So right side by virtual memory, descriptor, screensaver, bootstrap, print driver, disk defragmenter, solid state device, disk thrashing, refresh, cache. हमने इनको match करना है. So पहला हमारे पास the program that supplies static or moving images on a monitor when a computer has been left idle for a period of time. So अगर आप कंप्यूटर यूज नहीं कर रहे हो कंटिन्यूसली आपके पास जो है वो इमेजेस या कुछ भी आपके पास बना हुआ है स्क्रीन के ऊपर, that is screen saver. Software that rearranges blocks of data to remove unused data blocks. It arranges the data into contiguous sectors. So आपके पास rearrange करता है, अगर आपके पास आगे पीछे डेटा उनको contiguous form में ले आएगा. So that is a disk defragmenter. USB device drivers can contain information such as VID, PID, and unique serial number. So that's a descriptor. All right, then like a software that communicates with the soft operating system and translates data into
a format understood by input and output devices. Again, repeat kar raha hu, software that communicates with the operating system and translates data into a format understood by an input output device. So इसमें कोई हमें input output device से related कोई, because ये driver की बात हो रही है, so input output device का कोई driver है, बिल्कुल यहाँ पे example दिया हुआ of print driver, so I will use the print driver, otherwise यहाँ पे कोई generic term लिखा था वो मैं use करता. Used by DRAM to recharge capacitors every 15 microseconds to ensure values are retained by the RAM. So we have to refresh the DRAM every few microseconds. Device that uses floating gate and control gate transistors to allow the rewriting of data. So that's a solid state drive. Okay. All right. And this was our last question. Okay. So hopefully आपने इसको जब solve किया होगा तो आपने identify किया होगा कि आपकी mistakes क्या हैं, and आपने जो है वो basically करना है उन mistakes को resolve करना, उसको ठीक करना, समझना उसमें क्या problem था, and try to go over the content again, see if there is anything that you have missed out. If you would solve this paper, you would be basically must have gone over the entire thing. तो इसमें सारे chapters से related जो भी important चीज़ें हैं जो हमारे पेपर में आ सकती हैं उससे related questions है, तो hopefully this will help you prepare well. So this is यहाँ पे हम complete करेंगे. Hopefully exam आपका अच्छा जाएगा. Best of luck to you all. And let me know what happens in your exam. I will be waiting for your replies to me so that I know कि आपका exam कैसा गया. ठीक है? Best of luck guys. खुदा हाफिज़.